Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read possessive nouns. Now let's learn. Look at the pictures and read the groups of words given below them. Number 1, Priya's cat, monkey's tail, Ravina's house. First sentence, Priya's cat means the cat of Priya. Second, monkey's tail means the tail of the monkey. And third, Ravina's house means the house of Ravina, Ravina का घर. The S is called apostrophes and we use it to show possession. We use apostrophe S after most singular nouns to show ownership or relationship. Apostrophe S का जो हम यूज करते हैं like this, क्या शो करते हैं ये? ओनरशिप या रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, मीनू's स्कूल, माई मदर्स बुक, द ओल्ड मैन्स स्टिक. स्टिक किसकी है? ओल्ड मैन की. नाउ नोट, वी यूज एस ओनली विथ लिविंग थिंग्स एंड नॉट विथ एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ या नॉन लिविंग थिंग के साथ हम नहीं करते. वी कैनॉट से द टेबल्स लेग, बट वी से द लेग ऑफ द टेबल. टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, लेग ऑफ द टेबल. नाउ possessives of plural nouns are made by putting only the apostrophe after them as the girls' school. अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल में हम कैसे करेंगे? केवल लास्ट के ऊपर ऐसे कॉमा लगा देंगे. वो क्या शो करेगा? पोजेशन शो करेगा. द बॉयज हॉस्टल, द टीचर्स रूम. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट.